ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम अभी भी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। जो हमने पिछले एक हफ्ते में करंट अफेयर्स पढ़ा है, वो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट? तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। Who has recently become the first woman in 350 years to be appointed as the Astronomer Royal of Britain? The answer is going to be what? The answer is going to be Michelle Doherty, right? So answer is going to be option number C. Now, if I ask you this question, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूलिया सेबरिनडेंको ये कौन है? ये यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट? अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, सो यूक्रेन की राजधानी कौन मेरे को बता रहा है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी कीव, राइट? अगर मैं इसकी करेंसी पूछूं, कौन मेरे को बता रहा है यूक्रेन की करेंसी क्या है? राजधानी कैपिटल इज गोइंग टू बी कीव, दैट्स फाइन, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ यूक्रेन? द करेंसी ऑफ यूक्रेन इज गोइंग टू बी व्हाट? It's going to be Ravinia, right? So capital is going to be Kiev and the currency is going to be Ravinia, right? So remember this. Now coming on to the first question is done and dusted, right? Coming to the next question, and next question is again going to be a simple question. Second question क्या है? Who has recently returned the jewels related to the Piprava Buddha Stupa in Uttar Pradesh to India after 127 years? So the correct answer is going to be what? It's going to be Hong Kong, right? Now coming on to the third question. Where has the Indian Army recently conducted the high altitude technology demonstration exercise which is known as दिव्य दृष्टि? आपको बताना है दिव्य दृष्टि कहाँ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है, राइट? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी सिक्किम, राइट? अप टू हियर आई थिंक everything is clear. Now coming on to the next question that is there on your screen. Recently, which state's Hargila Army conservation model has Cambodia adopted for biodiversity conservation? So the right answer is going to be what? It's going to be the state Assam, right? असम अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज पिछले एक दो हफ्ते से आपने देखा होगा बहुत सारे करंट अफेयर्स असम के आ रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वहां से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, राइट? बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। एंड सो फार एज द दिस आंध्र प्रदेश इज क्लियर, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट दैट इज कमिंग इनटू न्यूज इज तेलंगाना। वहां पे भी आप देखो ना, गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। सो दीज आर द स्टेट्स दैट आर गोइंग टू बी इन योर लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कंबोडिया, कंबोडिया का राजधानी मेरे को कौन बताएगा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? द आंसर इज गोइंग टू बी नॉम्पे, राइट? अगर मैं कोलंबिया पूछूं तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते पता है? क्योंकि कंबोडिया और कोलंबिया दे आर वेरी सिमिलर सो फार एज द साउंड इज कंसर्न, राइट? मैं लिख देता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट कंबोडिया, दिस इज कंबोडिया, राइट? अगर मैं कंबोडिया का कैपिटल पूछूं, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी नॉम्पे, राइट? बट इफ आई आस्क यू द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कल के न्यूज में आपने देखा था ना, कोलंबिया आया था, राइट? नाउ आप मेरे को बताओ कि कोलंबिया का कैपिटल क्या है? द आंसर इज गोइंग टू बी बोगाटो। रिमेंबर कल के न्यूज में हमने पढ़ा था। सो इट्स गोइंग टू बी बोगाटो, बोगाटो, राइट? तो कंबोडिया का राजधानी क्या है? नॉम्पे है, और कोलंबिया का राजधानी क्या है? बोगाटो है, राइट? अगर आपसे पूछे कि अंकुर वाट मंदिर कहाँ है, द आंसर इज गोइंग टू बी कंबोडिया में, राइट? तो अंकुर वाट मंदिर कहाँ पे मिलेगा? कंबोडिया में मिलेगा, राइट? अगर मैं पूछूं कौन से डायनेस्टी ने अंकुर वाट मंदिर को बनाया है, द आंसर इज गोइंग टू बी खैमर डायनेस्टी, राइट? सो इट्स द खैमर डायनेस्टी हु बिल्ड दिस अंकुर वाट मंदिर, and it is there in Cambodia, right? And the capital of Cambodia is going to be Phnom Penh, and the capital of Colombia is going to be Bogota. यहाँ तक सबको clear है? Perfect. Now coming on to the next question. So where did renowned economist Meghnad Desai recently pass away? Answer is going to be what? It's going to be Britain, right? Coming on to the next question. Who recently won the Dr. B.C. Roy Football Trophy Tier 1 for the year 2025-26? So the answer is going to be Manipur, right? Now coming, final हुआ कहाँ था? अमृतसर में हुआ था, which is there in Punjab. Clear?
Now let's talk about the next question that is there on your screen. Recently, the safety technology Kavach 4.0 was in discussion. What is it related to? So it is related to preventing rail accidents, right? Similarly, किसान के लिए, farmers के लिए भी एक इनिशिएटिव लाया गया था, दैट इज व्हाट, किसान कवच, राइट? क्योंकि वो जितने भी पेस्टिसाइड्स वो छिड़काव करते हैं ना, उनका जो इम्पैक्ट है ना, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसे 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 कम करने के लिए किसानों को दिया गया है किसान कवच, राइट? सो विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, राइट? क्योंकि वो खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, राइट? उनसे बचने के लिए दे आर यूजिंग दिस किसान कवच, राइट? Now, coming to the next question that is there on your screen. So, where was India's first Make in India 1 megawatt green hydrogen plant recently inaugurated? So, the answer is going to be Kandla, right? और कांडला है कहाँ? गुजरात में, right? अब कांडला बोर्ड का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, right? ये भी चीज आपको दिमाग में रखना, because examiner may ask these types of questions, right? चलो, let's move forward. Now, coming on to the next question. What is the SRY gene test recently in the news related to? So it's related to gender testing, right? Here, coming on to the next question. In which year did the eruption of the Kalachevskoy volcano recently occur? So it has occurred in Russia, right? I hope it is clear. और रसिया आपको पता है ना, अभी रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा है, राइट? और किसके लिए चल रहा है? क्रीमिया इज अ प्लेस, राइट? सो क्रीमिया कम्स इन यूक्रेन, बट रसिया क्या दावा कर रहा है? रसिया दावा कर रहा है कि मतलब रसिया ऑपरेट करता है, क्रीमिया को ऑपरेट कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है, पर यूक्रेन का कहना है कि क्रीमिया इज माय पार्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस द वॉर इज गोइंग ऑन, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which government conducted an unsuccessful launch of its first orbital rocket IRIS? IRIS किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, राइट? हालांकि ये अनसक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who has been appointed as the prime minister in Myanmar's new central government? So the answer is going to be Lee Jae-myung, right? So थोड़ा नाम complex है, but if we revise it daily, you'll get it, no issue. चलो, let's move forward. Now, coming on to the next question. In Rajasthan, when will the 40-day cultural and spiritual wheel festival Garvi Rai begin? So it is going to be beginning on the Raksha Bandhan, right? So the answer is going to be Raksha Bandhan, right? Coming on to the next question. Recently, where was the new rare blood group CRIB discovered? So it was discovered in Bengaluru, right? So the answer is going to be what? It is going to be Bengaluru, right? Coming on to the next question. Recently, after 13 years, which medal did India win at the 2025 World Junior Team Squash Championship? So which medal India won? It was bronze medal. और अगर स्क्वैश की बात हुई तो आपको एक प्लेयर का नाम याद रखना है, एंड दैट प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह किस खेल से रिलेटेड है, राइट? सो अनाहत सिंह इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेयर so far as the squash is concerned. तो इसका नाम आपको याद रखना है, राइट? सो अनाहत सिंह is concerned with the sport that is squash, right? I hope it is clear. Chalo, let's move on to the next question. Recently, where has the construction of the first indigenous hovercraft for the Indian Coast Guard begun? So it began in Goa, right? और गोवा का कैपिटल सबको पता है ना, पणजी, right? I hope it is clear. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोवा मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ पे? वो गोवा में है. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which state becomes the first to implement a pilot project for faceless GST adjudication? So answer is going to be what? It's going to be Kerala, right? Kerala ये सब चीज में थोड़ा ज्यादा आगे रहता है. चलो, let's move on to the next question. Recently, which state lifted a 28 years old ban on traditional sports such as bullock cart races and pigeon racing? So it's Punjab. Punjab has lifted the ban which was there on bullock cart races and pigeon racing, right? I hope it is clear. जल्लीकट्टू आपको पता है ना, जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है, right? I hope it is clear. चलो, let's move forward. Now, the next question is, when is World Wide
Web, that is WWW Day, celebrated annually. So it's celebrated on 1st of August, right? And who has given this World Wide Web? It was Tim Berners-Lee, right? Who is the father of World Wide Web? It's going to be Tim Berners-Lee, right? Now, coming on to the next question. Recently, who assumed charge as the new Deputy Chief of Army Staff of India? So the answer is going to be Pushpendra Singh. See, यहाँ पे पूछा गया न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछे दैट इज गोइंग टू बी उपेंद्र द्विवेदी, राइट? ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है. अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द आंसर इज गोइंग टू बी उपेंद्र द्विवेदी. बट इफ इट इज आस्किंग डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द आंसर इज गोइंग टू बी पुष्पेंद्र सिंह, राइट? आई होप इट इज क्लियर. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अनिल चौहान आपको पता है ना, सेकंड CDS, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has ISRO recently launched the HOPE mission, which simulates life on the moon? So it has been launched in Ladakh, right? I hope it is clear. The answer is going to be Ladakh, right? Now ISRO सबको पता है ना, when it was founded? It was founded on 15th August 1969. And where is its headquarter? It's in Bengaluru, right? Who is the current chairman of ISRO? The answer is going to be V. Narayanan, right? इससे पहले कौन थे? S. Somnath ji the, right? Now, I think it's clear. Let's move on to the next question. Now, next question is there on your screen. In which country did the Crescenico volcano erupt after 600 years? Answer is going to be, again, it's going to be Russia, right? Coming on to the next question. Where will the third UN conference on landlocked developing countries begin? So the answer is going to be Turkmenistan, right? Coming on to the next question. Recently, which frigate built under Project 17A has been inducted into the army? So the answer is going to be Himgiri. The first one was Nilgiri, right? And if you talk about the Himgiri, this is going to be what? This is going to be the next one. I hope it is clear. Chalo, let's move forward. Now coming on to the next question. Recently, who has been chosen to host the 2027 Commonwealth यूथ गेम्स, राइट? आप देखो यहाँ पे पूछा गया कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स. अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम जो अभी जो होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है, वो कहाँ पे होने वाला है? वो स्कॉटलैंड में होने वाला है, राइट? और स्कॉटलैंड में भी कहाँ पे? ग्लासगो में, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम, सो इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन माल्टा, राइट? इट्स द नेम ऑफ द कंट्री, राइट? आई होप इट इज क्लियर. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now coming on to the next question. Who has recently assumed the post of the 47th Vice Chief of the Navy? The answer is going to be Sanjay Vatsyan, right? But अगर आपसे पूछे कि नेवी का हेड कौन है, the answer is going to be DK Tripathi, that is Dinesh Kumar Tripathi, right? But यहाँ आपसे हेड नहीं पूछा गया. The question is asking 47th Vice Chief of the Navy, that is going to be Sanjay Vatsyan, right? Coming on to the next question. Now the next question is, which film has won the Best Feature Film Award at the 71st National Film Awards 2023? The answer is going to be 12th Fail, right? And if you talk about the Best Actor, the award for the Best Actor was given to Shah Rukh Khan and Vikrant Messi, right? And Best Actress was given to Rani Mukherjee, right? I hope it is clear. Coming on to the next question. According to the Union Health Minister, what is India's global rank in organ transplant? This is going to be third, right? The rank is going to be third so far as the global rank in organ transplant is concerned, right? Coming on to the, ये सारे rankings आपको पता है, मैंने already revise कर रखा है. चलिए let's move on to the next question. Where did Union Environment Minister Bhupendra Yadav recently launch the Matru Van initiative to create a 750-acre urban forest? So it has been launched where? It has been launched in Gurugram. अब Gurugram किसको पता है कहाँ पे? Gurugram is there in, is it there in Haryana or Punjab? Who is going to tell me? It's there in Haryana, right? So Gurugram is going to be there in Haryana. अब मेरे को बताओ कि Gurugram में एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है. Can you tell me the name of that? That is going to be International Solar Alliance, right? मैं लिख देता हूँ. So if you talk about International Solar Alliance, so its headquarters is where? Its headquarters is in Gurugram, Haryana, right? और ये इंडिया और फ्रांस ने मिलके बनाया था. That you already know, right? चलो let's move forward. Now coming on to the next question. Recently ISRO announced
the launch of the 6,500 kg Bluebird communication satellite of which country's AST space mobile? The answer is going to be USA, United States of America, right? Coming on to the next question. Recently, where did the first BIMSTEC traditional music festival begin? So BIMSTEC's traditional music festival begin in New Delhi, right? लास्ट कल के क्लास में मैंने एक थोड़ा सा एरर किया था. इफ यू टॉक अबाउट बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का नेक्स्ट जो सम्मेलन होने वाला है ना, नेक्स्ट जो समिट होने वाला है, वो कहाँ पे? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, दैट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश, राइट, इन ढाका. बट वहां नहीं होने वाला है. बिम्स्टेक का जो नेक्स्ट जो समिट होगा ना, सम्मेलन होगा, वो कहाँ पे होगा? वो नेपाल में होगा. नेपाल की राजधानी काठमांडू में होगा. ठीक है. So this was the slight mistake that I committed in the last class. So please make it correct, right? Chalo, let's move forward. Now coming on to the next question. Recently, who won the title of the first Chess Esports World Cup 2025 held in Riyadh, Saudi Arabia? The answer is going to be Magnus Carlsen, right? I hope it is clear. Chalo, let's move forward. Yes, coming to the next question. Recently, who has been honored with the 43rd Lokmanya Tilak National Award? The answer is going to be नितिन गडकरी, राइट? नितिन गडकरी आपको पता है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है यूनियन में, राइट? सो आंसर इज गोइंग टू बी नितिन गडकरी, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the former chief minister of which state, Shibu Soren, passed away? The answer is going to be Jharkhand. That is quite simple. The answer is going to be Jharkhand, right? Coming on to the next question. Recently, who won the US Kids Golf World Championship in U9, means under 9 category? The answer is going to be Vedika Vansali. This is again important question. These questions may be there in your examination, right? The answer is going to be Vedika Vansali. Coming on to the next question. Recently, the nationwide initiative called Apna Ghar for truck drivers is related to which ministry? It's related to Ministry of Petroleum and Natural Gas. And who is the minister of this ministry? So this ministry comes under Hardeep Puri, right? I hope it is clear. Chalo, let's move forward. Now coming on to the next question. Recently, Gomti Nagar railway station became the first private railway station of which state? अब देखो ना, रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट बन गया, एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन, एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? इट बिलोंग्स टू यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश. सो गोमती नगर रेलवे स्टेशन इज द फर्स्ट private railway station of which state? That is going to be Uttar Pradesh, right? Coming on to the next question. Recently, the book The Rise of the Hitman, हिटमैन से ही आपको पता चल रहा है कि रोहित शर्मा का ही होगा, राइट? क्योंकि हिटमैन उसी को बोला जाता है. Recently, the book The Rise of Hitman by R. Kaushik, किसने लिखा है? That is again important. So this book The Rise of Hitman has been written by R. Kaushik, right? आप ऐसे याद रखो ना, R. Kaushik का मतलब रोहित शर्मा का बुक है, रोहित शर्मा के ऊपर लिखा गया, मतलब R से कुछ होगा, राइट? राइटर का नाम, ऐसे आप याद कर सकते हो, R. Kaushik, right? So it's related to Rohit Sharma, the hitman. Coming on to the next question. Recently, New India Cooperative Bank merged with which bank? The answer is going to be Saraswat Cooperative, right? Coming on to the next question. Recently, with whose cooperation did the Indian Army conduct its first naval exercise near the Scarborough Shoal in the South China Sea? The answer is going to be Philippines. अब मेरे को कौन बताएगा फिलीपींस का राजधानी क्या है, कैपिटल? The answer is going to be Manila, right? So the capital of this Philippines is going to be Manila, right? I hope it is clear. ठीक है, चलो let's move forward. Now coming on to the next question that is there on your screen. So 1987 INF nuclear weapons treaty recently in the news is related to which countries? So it is related to USA, Russia, right? So the answer is going to be USA, United States of America and Russia. Coming on to the next question. Recently, the International Air Transport Association ranked India in which position among the world's largest aviation market? So India has been ranked as 5th, right? So the position is going to be 5th. Coming on to the next question. Where will the WHO IRCH workshop on herbal medicine safety and regulation be initiated? So it is going to be initiated in Ghaziabad, right? So the answer is going to be Ghaziabad. Coming on to the next question. Where will FIFA and AIFF launch India's first FIFA Talent Academy for girls? So it's going to be launched in Hyderabad, right? Understood? And Hyderabad is the capital of Telangana, that you already know, right? हल्दी बोर्ड कहाँ है? वो भी तेलंगाना में ही है, निजामाबाद में. ये भी चीज आपको याद रखना है, हल्दी बोर्ड कहाँ है. This may be one of the question in your examination. चलो, let's move forward. Coming on to the next question.
वेयर हैज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र, अब देखो मैंने आपको बताया था ना आर्मी चीफ, आर्मी का हेड कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी है, राइट। सो वेयर हैज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी inaugurated the Agnishodh, this is again very important question, Agnishodh research cell recently, so it has been inaugurated in IIT Madras, right. Coming on to the next question, recently where did the Assam Rifles and the Indian Air Force conduct Operation Sahyog, again this operation is very important, and this operation has been conducted by Assam Rifles and Indian Air Force, right, to assist villages cut off due to landslides, so it has been conducted in Manipur, right. Here, coming on to the next question, where is the Sawalkot hydroelectric project? Again, this news is very important. Sawalkot hydroelectric project, which was in the news recently, is located where? It is located in Jammu and Kashmir, right? And this project is on the Chenab River that you already know. Chalo, let's move forward. Now, coming on to the next question. Recently deceased Satyapal Malik was associated with which field? The answer is going to be politics. आपको पता है ना, जब 370 हटा था उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो कौन थे? सत्यपाल मलिक थे, राइट। अंडरस्टूड। उनका हाल में ही निधन हो गया है, एंड सत्यपाल मलिक इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 2025 Pan American Hockey Cup, which countries' men's and women's teams both won gold medals? Answer is going to be Argentina, right? और लियोनेल मेसी कहाँ के? वो अर्जेंटीना के, राइट। और अर्जेंटीना के कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? इट इज गोइंग टू बी ब्यूनस आयर्स। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड बेंगलुरु सिक्योर इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स? मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहीं से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था। सो द रैंक वाज 26th, और टॉप कौन गया था? सिंगापुर गया था, इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मैंने बताया था, इट्स 151। सस्टेनेबल डेवलप गोल में इंडिया का रैंकिंग क्या है? 99। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट्स 130। जेंडर गैप इंडेक्स इट्स 131। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इट्स 96। पीस में 115, हैप्पीनेस में 118 रैंक, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली WHO has declared which of the following as carcinogenic? The answer is going to be hepatitis D, right? क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया था हेपेटाइटिस डी का कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, राइट। जिनको हेपेटाइटिस डी होता है ना वो हेपेटाइटिस बी का ही वैक्सीन लेते हैं, राइट। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हिच इज अराइजिंग, एंड पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस डी दे नीड टू बी टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ इट, राइट, क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं है। और आपको पता है हिपैट शब्द है, इट इज गोइंग टू बी कंसर्न विद द लिवर, सो इट मे कॉज लिवर कैंसर, इट्स वेरी हार्मफुल। And study of cancer, you know, it's going to be oncology. Onco मतलब क्या होता है? Cancer. Logy मतलब study. तो study of liver, I mean, study of cancer is going to be oncology, right? I hope it is clear. और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, सबको पता है ये। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम 1/7 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इट्स गोइंग टू बी मोल्डोवा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now Dhruva Space will launch its first commercial mission, that is Leap 1, by which vehicle? That is going to be Falcon 9, right? अब Falcon 9 आपको पता है ना SpaceX का है। SpaceX किसका कंपनी है? एलोन मस्क का है, right? I hope it is clear. Let's move forward. Recently who launched the India Electric Mobility Index, that is IEMI? इसको लॉन्च कौन किया है? नीति आयोग किया है, राइट। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मैंने आपको बताया था ना किसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया था? प्लानिंग कमीशन को, राइट। नीति आयोग आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दीज थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट फ्यू क्लासेस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Recently the Lok Sabha passed a bill to provide reservation for the scheduled tribes in the legislative assembly of which state? The answer is going to be what? It is going to be Goa, right? Perfect. क्योंकि आपको पता है ना गोवा में एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वो आधार किसको माने थे? 2001 के पॉपुलेशन को माने थे। पर इनका कहना है कि 2011 के पॉपुलेशन को आप आधार मान के हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कीजिए, एसटी का कहना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन गोवा, और बिल पास हो चुका है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट जॉइंट सेंसस कंडक्टेड इन केरला एंड तमिलनाडु, वेयर वाज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहार रिकॉर्डेड? सो इट वाज रिकॉर्डेड इन केरल। और केरल में भी कहां? एर्नाकुलम नेशनल पार्क, वहां सबसे ज्यादा। अगर मैं फर्स्ट आपसे पूछूं
लेट मी चेंज द इंक। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है, द आंसर इज गोइंग टू बी तमिलनाडु, राइट। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। उसके मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे, अगेन इट्स गोइंग टू बी इन तमिलनाडु। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में, राइट। द आंसर इज गोइंग टू बी एराविकुलम नेशनल पार्क। क्लियर? Let's move forward. Now, the question is, recently, where was the historic 30th session of the International Seabed Authority held? It was held in Kingston. याद आपको आ रहा है, किंगस्टन में हुआ था। किंगस्टन किसका राजधानी है, जमैका का है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So it was held in Kingston, and Kingston is the capital of which country? That is Jamaica. And Usain Bolt is concerned with this country, right? He is a resident of this country, that is Jamaica. Clear है? चलो, let's move forward. Recently, who launched the Mukhyamantri Nijut Moina Asoni 2.0 to promote higher education for girls? So it was launched by Assam government, right? क्यों इन्होंने लॉन्च किया? सो दैट गर्ल्स जो है ना, हायर एजुकेशन में गर्ल्स का ज्यादा एनरोलमेंट हो सके, राइट। इसके लिए वो कुछ कैश भी दे रहे, राइट, एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, राइट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's come to the next question. When is National Handloom Day celebrated every year? The answer is going to be 7th of August, right? 7th of August के पीछे का कहानी मैंने आपको बताया था ना, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल. The whole story was that you already know. चलो, let's move forward. Now coming on to the next question. Where will the 25th SCO, that is Shanghai Cooperation Organization Summit commence? कहाँ पे commence होगा, कहाँ पे start होगा? चाइना में स्टार्ट होगा, राइट। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग चाइना में, राइट। इसके टोटल कितने मेंबर्स है? इसके टोटल अब 10 मेंबर्स हो गए। लेटेस्ट मेंबर एससीओ के कौन है? बेलारूस है, राइट। ये चीज हमने ऑलरेडी कर रखा है। और मैंने आपको बताया था ना, खिड़की से 2 मेंबर जो देख रहा था, उसको हमने क्या बोला था, रिमेंबर? सो द नेम ऑफ दोज मेंबर्स आर व्हाट? फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान एंड सेकंड वन वाज मंगोलिया. दीज आर नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ, राइट। आई होप इट इज क्लियर. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पर्यवेक्षक सदस्य, जो बस खिड़की से ही देख सकता है। ऑब्जर्विंग जिसको मेंबर बोलते हैं ना, इसको ऑब्जर्विंग. दीज टू आर व्हाट? दीज टू आर ऑब्जर्विंग मेंबर, राइट। दीज आर नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ. आई होप इट इज क्लियर. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, due to heavy rainfall in Uttarkasi district of Uttarakhand, which river caused a massive destruction due to sudden flood? The answer is going to be खीर गंगा रिवर. और इसमें मैंने आपको बताया था ना कि लोगों का कहना है कि बादल फटने से ही ऐसा होगा, बट साइंटिस्ट का क्या कहना है कि ग्लेशियर फटने से ऐसा हुआ होगा, राइट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Recently, where has the World Meteorological Organization certified a 829-kilometer mega flash lightning record? So it's going to be in USA, right? Coming on to the next question. Recently, the acting president of which country, Yu Mint Sue, passed away at the age of 74. It's going to be Myanmar, right? I hope it is clear. Chalo, let's move forward. Recently, where did the 12th World Games 2025 commence? Sorry, the answer is going to be China, right? Now, coming on to the next question. Again, simple question. Recently, what is the repo rate set by the Monetary Policy Committee? So, repo rate बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. आपको पता है ना, रेपो रेट साल में 6 बार रिव्यू किया जाता है, एक साल में. लास्ट 2 महीने में जो रेपो रेट था ना, वो भी वही रेपो रेट अभी भी है. सो इट गॉट अनचेंज्ड एंड इट इज स्टिकिंग टू 5.5%, राइट. मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि बैंक रेट जो होगा ना, वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा, राइट. और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा. सो ये चीज मैंने आपको बताया था ना, BR इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रेपो रेट एंड रेपो रेट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट. ये चीज आपको, ये हमेशा, दिस इज ट्रू, 100% दिस इज ट्रू. गॉट इट. और रेपो रेट मैंने आपको बताया था ना, रेपो रेट क्या होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था. सपोज वी हैव रिजर्व बैंक, राइट. रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक. लेट्स सपोज वी हैव अनदर बैंक, लेट्स सपोज दैट इज SBI, राइट. SBI रिजर्व बैंक के पास आया, SBI को लोन चाहिए, राइट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन SBI को दे रहा है, राइट, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, that rate of interest is going to be called as repo rate, right? I hope it is clear. Chalo, let's move forward. Now coming on to the next question. Recently, which state became the first to include sign language experts in the panel under the Juvenile Justice Act? That is going to be Punjab. Simple. Coming on to the next question. Recently, in which states Balakona Jamnidhi block was a reserve of nickel, copper, platinum,
group elements discovered? So it was discovered in Chhattisgarh, right? Coming on to the next question. Recently, who launched the AI-powered learning app Tutos for students preparing for competitive examination? So it was launched by IIT Palakkad, right? So मैंने इसमें आपको बताया था ना, इसमें DPP भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी डाउट्स होंगे, so they can ask the doubts in the form of text, video or in the image format, right? Understood? So it is going to be launched by what? It is going to be launched by IIT Palakkad, right? Chalo, let's move forward. Now, coming on to the next question. Recently, who has been appointed as the brand ambassador for Tourism Australia? So it's Sara Tendulkar, right? The daughter of Sachin Tendulkar. All right, let's move forward. Recently, the winner of the first global MS Swaminathan Award 2025, Dr. Ademola Adelli, is from which country? So he's from Nigeria, right? And Nigeria capital is going to be Abuja. It is also known as palm oil country. And so far as the Africa continent is concerned, so it is the country which is having maximum what population. Perfect. Coming on to the next question. Recently, India has been selected as the guest of honor for 38th Bogota International Book Fair 2026 of which country? Bogota, जैसे ही आपने सुना, आपके दिमाग में ये शब्द जाना चाहिए. Bogota is the capital of Colombia. So the answer is going to be Colombia, right? Simple. चलो, let's move forward. Brazil का capital क्या है? Brasilia, right? Now the next question is, recently who has been appointed as the new chairperson of the Capacity Building Commission? Yeah, the retired IAS officer, that is S. Radha Chauhan, right? I hope it is clear. Coming to the next question, according to the IIT Delhi and IIT Gandhinagar, which district ranks highest in the first district flood severity index? That's going to be Patna, which is there in Bihar, right? Next पे कौन आता है? Murshidabad. Number 1, that's going to be Patna. Number 2, that is going to be Murshidabad, that is going to be in West Bengal. And number 3, that is going to be Thane. और सबसे ज्यादा एक साल में सबसे ज्यादा, और वो नंबर क्या था? 4 बार, एक साल में 4 बार फ्लड कहाँ पे आया है? वो आया है, अब बताओ, केरल में एक जगह है ना, तिरुवनंतपुरम, राइट? वहां पे एक साल में मैक्सिमम बार फ्लड आया है, राइट? I hope this concept is clear. Let's move on to the next question. Recently, where was India's first I-STEM catalysis center launched? STEM का full form सबको पता है? S से science, T से technology, E से engineering और M से mathematics, right? तो I-STEM catalysis कहाँ launch हुआ है और इंडिया का first I-STEM catalysis center है? ये NIT कालीकट में launch हुआ है, right? Perfect. Coming on to the next question. According to the Federation of Indian Export Organizations, which is the top exporting state in financial year 2024-25, so it's going to be Gujarat. और गुजरात का भी कौन सा जगह? That is going to be Jamnagar. Perfect. Coming on to the second position पे क्या है? Second position पे आप मेरे को बताओ. Second position पे it's going to be Maharashtra, right? Coming on to the next question. Who secured the top position in Fortune's 2025 list of the world's top 10 most powerful business person? और let's say business people, the answer is going to be Jensen Huang. और ये किसके सीईओ है? एनवीडिया कंपनी, राइट? जो एआई में बहुत कंट्रीब्यूशन एआई का रहा है इस कंपनी का, राइट? परफेक्ट. और सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, राइट? एंड थर्ड पोजीशन इज गोइंग टू बी फेसबुक, द सीईओ ऑफ फेसबुक, राइट? दैट इज मार्क जुकरबर्ग. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है. परफेक्ट. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, where did the government e-marketplace, that is GEM, celebrate its 9th foundation day? The answer is going to be 8th of August, right? Coming on to the next question. Recently, where was the second edition of UN Women's Seal its second program launched? So it was launched in New Delhi, right? और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? Remember, अन्नपूर्णा देवी, right? महिला एवं बाल विकास मंत्री जी जो हैं, right? इससे पहले कौन थे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो. Alright, coming on to the next question. Recently, Tata Autocom announced the acquisition of the IAC group of which country? So it's going to be Slovakia. Perfect. Coming on to the next question. So we have completed all the questions successfully. All right. So we have done a revision of more than 70 questions. And these are the questions which we have already done from 1st of August till 9th of August. I hope every question is perfectly fine. And we have revised all these questions once again. All right. So let's close the class. So we will be meeting again in the next class with the same energy. And tomorrow we'll be having
the current affairs of, 10th of August, right? So till then, goodbye. See you in the next class, and God bless you and be happy. Thank you, everyone. Have a great day.